Great turnaround, like I said, by Pakistan after lunch. There was that time when England were getting the wickets, but Pakistan managed to have that partnership. Saud Shakeel was the star performer for them today. And with the ball, Sajid Khan, you can just not keep that man out of action, whether it's with the bat or with the ball. And to talk more about him and generally today's test match, I've got David Cower and Ramiz Raja. Rambo, great day for Pakistan in the end, because the way it was going at lunch, it seemed like it's England all the way. It seemed like there'd be probably some kind of a lead for them. But then what did Pakistan have for lunch? Probably Subway, which we had. But no, on a serious note, I think Pakistan deserved this position because this is not the first time that their last 8, 9, 10 batsmen have absolutely bossed the proceedings compared to what England have produced with the tail. Pakistan are way ahead. 600 plus runs scored by the last 3 wickets, and so there was great determination, a lot of common sense. Saud Shakeel was outstanding. I mean, he manicured. It was a manicured innings. It wasn't as if he was bashing the ball. It was like, halki pulki chapat, thodi bahut, and not more than that. And that was enough. I didn't like the tactics from Ben Stokes, actually. And I mentioned that in the commentary stint as well, because they allowed Saud Shakeel and company to just rotate the strike at will. And for good 110 balls, there was this sequence of ones and twos that actually helped Pakistan to build momentum and put pressure on England. And the field was still the same. 2 men at cover, or either 1 man at mid-wicket, 2 men at cover for both, actually. It wasn't as if they were attacking Noman or attacking Sajid. And so it allowed an easy passage for Pakistan. I agree with that. And one thing that struck me too is that normally speaking, Ben Stokes, who can be incredibly proactive on a good day, and has been for the last 3 years, give or take, would at some stage say, give me the ball. Correct. Let me see what I can do, because he's that sort of leader. And for him to at no stage offer to bowl, any of the quicker overs were all bowled by Gus Atkinson. But I take the point, and I'm sure Saud Shakeel himself would have said, this is fine, this suits me absolutely fine, because he knew his role. The great thing about Saud's innings is he knew his role perfectly. Correct. Nothing ostentatious, keep adding the runs up, and I have to say, this was a fully deserved 100. One slice of half luck early on at 26, with a half chance drop behind the stumps, but such a measured innings. So calculated, so calm, so cool, picked up runs. I mean, he didn't look in any trouble, and that's the mark of a man who knows exactly what he's doing. A nice pat on the head. I mean, if you talk about his innings, Rambo, I mean, there weren't many boundaries or sixes. Just 4 or 5. He ran really hard for those runs that he scored. Yeah, I mean, look at the batting chart there, the wagon wheel as it's called. And so it's just little nudges and little pushes over towards square leg and mid-wicket. Nothing extravagantly straight as well. He likes playing the cut shot. He didn't play a lot of sweep shots as well. So England didn't really get him out of his comfort zones as well. Because playing a sweep shot on this pitch can be just a little bit taxing and hazardous. And he didn't require to play any other shot but that, just glide the ball for a run or nudge it through the offside for a single. We've got to talk about Sajid Khan, because what a character he is. You just can't keep him out of the game. He is, absolutely. I mean, he's wonderful for the game, wonderful test match. And, Pakistan needed such a character to just G them up, because they were going down and out since last 2-3 years. We haven't won anything at home in test cricket. And here comes Sajid. Everyone underestimated his spirit, his talent. And look at that kid. I mean, obviously he wants to grow a moustache like Sajid Khan. Handlebar moustache. Yeah, I'd like to, but I can't. Yeah, I'm trying one. Yeah, he wears his heart on his sleeve for sure, DG. I mean, but these contributions by the tailenders from Pakistan were absolutely crucial. Whether it was Noman Ali or Sajid Khan, they've been contributing since that last test match, really. Well, they both made it incredibly easy for Saud, the other end, just to carry on playing. And he knew they could play the big shots. Yeah. The Sajid Khan thing is extraordinary. I mean, the ability for a tailender is helped by one little thing. When you're batting at 9 and 10, if you miss cue, well, you're 9 or 10. It's not quite so important. Hence, when you look at England later in the day, trying to bat like numbers 1, 2, 3, as if they know exactly what they're doing, and under immense pressure, because the psychology is so different. But when you're down the order,
and just looking for that lead. When you gain the confidence and the freedom to play those shots, you just put all the pressure back on the bowlers. And it then starts to look as though it's not turning at all. And so it was a brilliant way to gain the ascendancy. All right, second innings by England then, already lost 3 wickets. Would you attribute that to the pitch conditions, Pakistan's bowling, or how do you look back at the dismissals? I would start with Pakistan's bowling. Apart from Simon Ayub having to bowl one at the start, which was just a fill-in. Again, the 2 usual suspects, Sajid and Noman, very clever with the mixture of the brand new ball turning when tweaked and then sliding on when not tweaked. And that is so hard to play with this, with the way the regulations are written nowadays and the way LBWs work. If you get it slightly wrong like this, so both Duckett and Crawley beaten on the inside edge when they're worried about the ball going on the outside. Pope was just undone by the fact that he was trying ever so hard to get forward, to smother the spin, completely misread the change of pace from that's really clever bowling, because Pope thought that was going to be 1.5 yards fuller, and it wasn't. I mean, that's clever bowling, taking all the pace off, dropping it short. Pope got so low that it wasn't an edge, it was a glove. And which is a big mistake. I mean, it is a big mistake, but also a really lovely piece of bowling. Well, thank you so much for your insight and thoughts, as always, DG. Well, we're talking about the man of the moment, Saud Shakeel. What an innings it was by him. We'll hear from him on the other side. A quick reminder of how things went on day 2 of this test match. It's the final test match between Pakistan and England, and England are trailing by 53 runs. Pakistan has got 3 wickets off England, courtesy Noman Ali and Sajid Khan. Well, before the break, we spoke about how good Saud Shakeel was with the bat and the kind of support he got from the tailenders. Now we have the man of the moment with us on pitch side. Saud, thank you so much for joining us. Saud, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो जिस किस्म का 100 आपने खेला है अंडर प्रेशर. उस वक्त कुछ विकेट्स गिर चुकी हुई थी, तो बताइए अपनी थोड़ी इनिंग्स के बारे में बताइए, बिकॉज एक चीज़ जो हमने आपकी तरफ से देखी कि इतनी ज़्यादा ये नहीं था कि बाउंड्रीज़ या सिक्सेस में जा रहे हैं, बहुत ही एक सेंसिबल तरीके से आपको नज़र आया किस तरह से आपने अपनी इनिंग्स को पेश किया. जी बिल्कुल, अगर स्टार्ट से ही देखें ना तो आज इस वाली इनिंग में ना इंग्लैंड की तरफ से जो है ना थोड़ा सा मुझे डिफेंसिव अप्रोच लगा था. जब मैं कल अर्ली ऑन बैटिंग पे भी गया तो उन्होंने थोड़ी सी फील्ड पीछे रखी हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए आसानी है. उसमें ये होता है कि अगर आप देखें तो मुझे सिंगल्स लेके फिर सेट होने का टाइम मिल जाता है, तो वो मैं समझता हूँ वो मेरी स्ट्रेंथ भी है और इंग्लैंड की वीकनेस भी थी वो. और इसमें यह है कि फिर मुझे जब एक मोमेंटम मिल गया कि जब मेरा सिंगल से काम लेना शुरू हो गया तो फिर मैं उसी पे स्टिक रहा. फिर मैंने कोई चांस एक्स्ट्रा नहीं लिया, मैंने कोशिश की अगर मेरा सिंगल से काम हो रहा है तो मैं उसी पे रहूँ. दूसरी चीज़ जो नज़र आई, ऑब्वियसली आपकी तो शानदार इनिंग्स थी, लेकिन आपके साथ जो आपको सपोर्ट मिला, पहले नुमान अली आए, उसके बाद साजिद खान जब आए तब आपने उनको ये कहा भी एक पॉइंट पे कि हर बॉल पे शॉट मारने के लिए ना जाओ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. कि बिल्कुल नहीं सुनी इनकी. हाँ, एक टाइम पे तो फिर मैं गुस्सा हो गया, मैं काफ़ी उस पर गुस्सा किया. अमूमन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन देखें हम जिस तरह नुमान भाई खेले, बहुत मज़ा आ रहा था उनके साथ खेल के. और जो ना जो एक स्टेप मैंने वहाँ लेना था वो ऐसा लग रहा था कि नुमान भाई ले गया और साजिद ने वो स्टेप लिया जो कि रोल मुझे लेना था, तो मेरा काम वहाँ पे और ज़्यादा आसान हो गया था. लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उन दोनों को, जो जिस सिचुएशन में अभी हम हैं उसमें लाने के लिए उन दोनों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उसमें. देखिए, आपकी बैटिंग देख के ना और आपकी पर्सनैलिटी देख के कुछ सुकून सा महसूस होता है. कामनेस है आप में, वो इनबिल्ट है या वो किस तरह से आपने की है ये अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम? नेचुरल है? आपको गुस्सा नहीं आता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि गुस्सा नहीं भी आता, लेकिन यह है कि कुछ जो आपकी कुछ लिमिट्स होती है ना, तो आपको कभी कभार उस पर रहना पड़ता है. अगर मुझे मेरे सिंगल डबल अगर उस टाइम पे अच्छे हो रहे हैं तो मैं ज़्यादा पे रिस्क नहीं लेता, वो उस पर रहता हूँ. मेरे ख्याल में अपने गेम को सोचते हुए रहते हुए और जो आपसे अच्छा हो रहा है उस टाइम पे उस पर रहते हुए उस पर रहता हूँ. और स्पिन को इतना अच्छा कैसे खेलते हैं आप? इसकी क्या कोई ख़ास बचपन से या आपकी जो ट्रेनिंग हुई है वो क्या स्पिनिंग कंडीशंस में हुई है या एक नेचुरल गिफ्ट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखें अगर आप एक कराची का प्लेयर होते हैं तो आपको भी पता है कि वहाँ स्पिन विकेट्स होते हैं और आप बड़े हुए होते ही हो कि स्पिन खेलते हुए आ रहे हो. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरा सिंगल लेने की जो स्ट्रेंथ है, मैंने उस पर हमेशा से बहुत ज़्यादा काम किया और मैं अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ है. मुझे पता है सिंगल स्ट्राइक रोटेट करना है, सिंगल लेना है, मैं किसी भी एंगल से सिंगल ले सकता हूँ, विद द स्पिन भी ले सकता हूँ, विद द स्पिन भी ले सकता हूँ. तो बीच में कोई जगह पर जब मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो रही थी तो मैं भी अपने चीज़ों से थोड़ा हट रहा था
लेकिन ये है कि फिर बाद में फिर समझ में आती है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर रहना चाहिए। एक और सवाल, पेस बॉलिंग कंपेयर टू स्पिन बॉलिंग, जिस तरह से आप खेलते हैं वो हमारे पास स्टैट्स होते हैं कि आप मतलब है वर्ल्ड क्लास बैटिंग है आपकी स्पिन के अगेंस्ट, पेस बॉलिंग के अगेंस्ट क्या मेहनत करें? क्योंकि अगली जो आपकी सीरीज़ हैं वो टफ़ सीरीज़ हैं। टफ़ से मुराद ये कि कंडीशंस डिफरेंट होंगी और आजकल जो एनालिटिकल फील्ड है उसमें बात पहुंचेगी कि किस लेंथ पे आपको बॉल करनी है। उसके बारे में क्या आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उस पर बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ कि कौन सी लेंस जो ना मुझे मसला कर रही हैं, और मुझे पता है मैं किस किस जगह पे जो ना शायद आप जिससे मैं समझा सकूं कि मैं थोड़ा सा खुल रहा हूँ और मेरा पीछे वाला लेग जो है वो जो है वो ओपन हो रहा है, तो मैं उस पर बखूबी काम कर रहा हूँ और मुझे आइडिया है कि किन चीज़ लेंस पे मुझे काम करना है आगे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ के लिए। लेकिन ये है कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इतनी ज़्यादा स्पिन में नहीं खेलते, आप ज़्यादा वहाँ पे फास्ट बॉलर खेलते हैं, तो ऐसा। लेकिन ये कि जो थोड़ा सा एक पेस का फैक्टर होता है, वहाँ जो 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आता है, उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ पे भी रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, मैच सिचुएशन पे आ जाते हैं। काफ़ी फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए बिकॉज 3 विकेट्स भी लेनी है। आप खेल रहे थे, आपको कंडीशंस का ज़्यादा अंदाज़ा है कि किस तरफ जा रही है। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना कभी आसान नहीं होता, ये तो सबको ही पता है, बट क्या लग रहा है जितना आपने खेला है कि कैसी थी पिच? आई मीन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू परहैप्स वॉच आउट फॉर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बॉल की हार्डनेस है ना, वो जितनी देर उस पर रहेगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है बैटिंग करने के लिए। जैसा जैसा थोड़ा सा बॉल सॉफ्ट होता है तो वहाँ पे आपको जाके टाइम मिल जाता है। लेकिन देखें, जब प्रेशर पड़ेगा और जो सिचुएशन पड़ेगी उसके मुताबिक अगर हम वो कैपिटलाइज़ कर लें और वहाँ उनको पकड़ लें, तो मैं समझता हूँ कि हम इस मैच में काफ़ी इन है। ऊपर के नंबर्स पे बैटिंग करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी मतलब मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी खेला, मैं 3 नंबर पे खेला। मैं पाकिस्तान के लिए जब से खेल रहा हूँ तो मैं 5 नंबर पे, और वनडे क्रिकेट भी 5-6 नंबर पे खेल रहा हूँ। मैं इतनी डोमेस्टिक में इतने नीचे के नंबर्स पे खेला नहीं हूँ। अब जाके मैं जब डोमेस्टिक खेलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे नंबर्स पे खेलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रोल पाकिस्तान टीम में फ़िलहाल क्या है। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नंबर 3 पे खेलते हैं डोमेस्टिक में, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है पेस बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी और स्पिन के ख़िलाफ़ भी। सो अगर आप पेस बॉलिंग के ख़िलाफ़ बैटिंग को उसमें और निखार आना, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि डोमेस्टिक में 3 पे खेलें। जी बिल्कुल, मैं आपको कहा कि अगर आप मेरे डोमेस्टिक का स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो मेरी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस और सबसे ज़्यादा रन ही 3 नंबर में है। तो ये वाइस कप्तान भी है ना, तो 6 नंबर से तो लीड नहीं करेंगे आप अगर कप्तान बनते हैं तो। देखते हैं इस पर। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतना ज़्यादा हमें नंबर हिलाने की ज़रूरत है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर मैं समझ रहा हूँ आइडली ऊपर के नंबर्स पे भी आपकी बनती है बात, क्योंकि इतने रॉक सॉलिड हैं आप। बिल्कुल, चले ठीक है, थैंक यू सो मच साउथ फॉर योर थॉट्स। यू वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टुडे। इनफैक्ट एक टाइम था जब लग रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात में है और आपने पाकिस्तान को वापस, मुझे भी लग रहा था, आप लग रहा था, सबको लग रहा था उस वक्त, लेकिन आपको बड़ा अच्छा साथ दिया साजिद खान ने भी, नुमानी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड लक फॉर टुमारो ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू सो मच रमीज फॉर योर थॉट्स। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव you on Pitside, and we shall be meeting you for day 3 of this test match tomorrow. It's an important day. Who knows, could be potentially the decider of this test match, and we are starting tomorrow at 9:25, whereas the world feed, it starts at 9:33 a.m. Well, fantastic day's play overall in this test match. It's been a fantastic test match so far, and Pakistan would be the happier camp at the end of the day, and of course they'd be looking to get those wickets early tomorrow in that first session. Plenty to look forward to for tomorrow. Until then, it's goodbye from all of us.